Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner. How are you all? I hope all of you are doing well. As you know, we have completed chapter 5, Changes Around Us, Physical and Chemical, from our science NCERT book Curiosity of Standard 7. Today we will be doing important points. Explanation of this chapter has been covered in one video, and summary and question answers are also being covered in the second video. So today we will do important points. First, quickly let us see what are physical and chemical change. As I have already told you that physical change is a change in which no new substance is formed and it is reversible. Chemical change is a change where new substance is formed and it is irreversible. We have read about physical and chemical changes in this chapter, and we are going to cover all the important points of this chapter. So let's start. Point number 1, physical change. A change in which only physical properties of a substance change and no new substance is formed. So a physical change is that change in which only physical property. Now what do you mean by physical property? Physical properties means that shape, size, color, state of substance changes but no new substance is formed. For example, if we talk about freezing of water into ice, then uh, water changes to ice when we freeze it. So the state of water here changes from liquid to solid. So physical properties basically means that when we talk about shape, change in shape, size, color, state of a substance, so there is a physical there is a change of physical property but no new substance is formed. Then it is reversible change, means if we take example of stretching of a rubber band. Okay, so when we stretch a rubber band, what will happen, that we will get back the rubber band and no new substance will be formed. So it is a reversible change. When we get the thing back or any object or substance back, it is called reversible, and this is a reversible. Physical change is a reversible change. For example, freezing of water into ice, stretching of rubber band, etc. So freezing of water into ice means we are changing state of water. Okay, we are changing a physical property. When we are freezing water, it changes into liquid, changes into solid, into ice. So physical property is changed here but no new substance is formed. Then stretching of a rubber band again is the example of physical change. When we stretch it and when it come back to its normal length or position, at that time what will happen, it is a physical change because no new substance is formed and we get back the same rubber band. So this is stretching of rubber band is a physical change. We have more examples like attraction of iron filling by a magnet. Okay, when we will remove the magnet, what will happen, we'll get back the iron filling. So it is a reversible change because no new substance is formed, and in this way only we can identify that whether it is a physical change or some other change, means chemical change. How? By identifying that is there any change in the physical property of a substance like size, shape, color. Is there any change, physical property change, no new substance is formed, it is reversible change, so it is a physical change. Then we have chemical change, a change in which a new substance is formed and it is irreversible. So a change where a new substance is formed and it is always irreversible, means we cannot reverse it.
Okay, it cannot be reversed. And when this change take place, there is a new substance which is formed. For example, combustion, when we burn a fuel, okay, it is a chemical change. Here a new substance is formed, rusting. Okay, rusting again is the example of chemical change. Chemical change is where a new substance is formed, and it is irreversible. Okay, so in case what is rusting, you know, when we keep a piece of iron left in open for some time, it acquires a film of brownish substance which is rust, and this process by which rust is formed on an iron object, it is called rusting. Okay, so when rusting is there, rusting is a new object which is formed over here. Okay, when iron reacts with oxygen, we get iron oxide. So iron oxide is a new substance which is formed here, and it is irreversible. So it is a chemical change. A chemical change is also known as chemical reaction. Now, why it is known as chemical reaction? Because chemical changes, two or more substances combine or undergo to produce one or new substance, and that is why there is a change. It has different chemical property. The substance which is the new substance which is formed has a different chemical property in them. That is why it is also called chemical reaction. New substances are formed through a process called chemical reaction. So new substance is formed when there is any process. In any of the process, it is called chemical reaction. So it means that when two or more substances combine together to produce or form a new substance, which has a different chemical properties. So that new substance which is formed, it is called a chemical reaction. So always a new substance is formed through a process called chemical reaction. The chemical reaction can be represented in short as chemical equation. So what is a chemical equation? This is a definition that the chemical reaction can be represented in short form, or we can also say that brief representation. Brief means short representation of a chemical reaction with the help of you can say some formulae or symbols. It is called chemical equation. Okay, so when chemical reaction is written in short form, it is called chemical equation. The lime water turns milky due to presence of carbon dioxide, which is seen with fizzy bubbling sound. So when lime water turns milky. When does lime water turn milky? When it reacts with carbon dioxide gas. So when carbon dioxide gas is passed through freshly prepared lime water, then the lime water turns milky due to formation of calcium carbonate, and you can hear the presence of carbon dioxide gas with the help of fizzy bubbling sound. Like when we put Eno in water, there is a bubbling sound. Same way, the lime water turns milky due to presence of carbon dioxide, which can be heard or seen with fizzy bubbling sound. So when we hear this fizzy bubbling sound, it means the carbon dioxide is present in the lime water. Rusting is a chemical change because it involves formation of a new substance called iron oxide. So I have already explained what is rusting. Rusting क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जहाँ पर किसी आयरन ऑब्जेक्ट को जब हम एयर में रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, ओपन में रखते हैं, तो उसके ऊपर आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो एक ब्राउन सी फिल्म आ जाती है, या ब्राउन सी लेयर आ जाती है, या स्पॉट्स आ जाते हैं, उसे हम रस्टिंग बोलते हैं। और ये केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। केमिकल चेंज में हमेशा नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और वो
जो है केमिकल चेंज जो है वो हमेशा इरिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो केमिकल चेंज हो रहा है रस्टिंग में, उसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कौन सा? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है? जब आयरन और ऑक्सीजन जो है वो मिल जाते हैं, उसमें उससे हमें आयरन ऑक्साइड जो है वो मिलता है। ठीक है, सो दिस इज अ chemical change. Rusting is a chemical change. The burning of magnesium ribbon in air is a chemical change as it forms magnesium oxide. Also the burning of magnesium ribbon. When magnesium ribbon, जब magnesium ribbon को हम burn करते हैं air में, ठीक है, तो it is a chemical change. क्यों chemical change क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी एक new object form हो रहा है, new substance form हो रहा है, that is magnesium oxide. The magnesium is burnt in air, then it is a chemical change. क्यों? क्योंकि it forms magnesium oxide. A chemical change in which a substance reacts with oxygen and produces heat and light is called combustion. So combustion क्या है? combustion एक ऐसी process है, एक chemical change है जहाँ पर एक substance किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट और लाइट. इट इज कॉल्ड कंबस्शन, राइट? सो कंबस्शन की डेफिनेशन है ये कि इट इज अ केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्शन. तो कंबस्शन, यहाँ पर 3 केमिकल चेंज हमने पढ़े. कौन से? एक पढ़ा हमने रस्टिंग. रस्टिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ brown brown deposit or layer of a brownish substance on iron object. It is called rusting. ये एक केमिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि यहाँ एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, आयरन ऑक्साइड. और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया जाता है तो वो बर्न करती है एक वाइट फ्लेम के साथ, ठीक है, और एक पाउडरी सा सब्सटेंस, पाउडरी ऐश जो है वो छोड़ जाती है, और उसको जो है हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ भी एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. तो 3 प्रोसेस बताए, एक रस्टिंग, मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड कंबस्टन. ये सारे ही केमिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म है. Substances that undergo combustion reaction are called combustible substance. ऐसे substances जो combustion reaction करते हैं, जो burning में help करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? combustible substances. For example, wood, paper, cotton, kerosene, etc. Okay, so this is the definition of combustible substances. Then we have component of air that support combustion is oxygen. सबसे important component air का जो है, जो combustion को, burning को support करता है, वो है oxygen. जब भी हम oxygen को cut कर दें तो उस टाइम पर क्या होगा? जो burning है या जो fire है वो बंद हो जाएगी या रुक जाएगी. तो मेन component जो है, जो air का combustion को support करने वाला, वो है oxygen. Insects that emit light are called fireflies and their light is produced by a chemical change. ठीक है, ऐसे इंसेक्ट जो लाइट जो है एमिट करते हैं, ठीक है, और जो लाइट दिखाते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? फायरफ्लाइज. और इनकी जो लाइट होती है वो एक केमिकल चेंज की वजह से प्रोड्यूस होती है. This type of light production without heat in living organisms is called bioluminescence. So इस तरह की लाइट जो विदाउट हीट, जो फायरफ्लाइज में होती है, जो विदाउट हीट जो लाइट वो एमिट करते हैं, इसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस. The minimum temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. So definition of ignition temperature क्या है? ignition temperature की definition है कि ऐसा minimum temperature, कम से कम temperature जिसपे एक substance fire catch कर सकता है, उसे हम बोलते हैं ignition temperature. Melting of wax is a physical change and burning of vapor is a chemical change.
मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। जब एक वैक्स मेल्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, क्योंकि हमें उससे कुछ जो है वैक्स जो है, एक तो जब वो मेल्ट होगी तो हमें उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और इट इज़ अ रिवर्सेबल चेंज, ठीक है। इफ़ वी वांट वील गेट दी मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो वैक्स हमें जो मिली है, ठीक है, उससे हम दोबारा कैंडल बना सकते हैं। बर्निंग ऑफ वेपर इज़ अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वेपर, जब वेपर बर्न होता है उसमें तो वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि उससे हमें जो है वो इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज, दैट इज कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबस्शन। कंबस्शन मीन्स बर्निंग। बर्निंग के लिए जो कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं वो तीन कंडीशन है। एक तो फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन मतलब एयर, इग्निशन टेम्परेचर मतलब मिनिमम टेम्परेचर एक सब्सटेंस को जो चाहिए बर्न होने के लिए वो होना चाहिए। तो थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स कंडीशंस आर फ्यूल, oxygen and ignition temperature. Michael Faraday delivered a series of lectures called Chemical History of a Candle. So we have learnt about this scientist in the chapter also, that Michael Faraday, he delivered the lectures about the chemical history of a candle. That about he told everything about the candle, about the history of candle, how it is made, when it is burnt, what will happen, and everything about the changes which occur in the candle. So he has delivered lectures uh, called Chemical History of a Candle. Who? Michael Faraday, the scientist. Sandstones and soil lying at the base of mountains is called sediment. Sediment हम किसे बोलते हैं? जो रेत, स्टोन्स, पत्थर छोटे छोटे और सॉइल जो माउंटेन के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट. A black colored rock called basalt changes to red color due to the presence of iron oxide. So एक रॉक की बात हो रही है यहाँ पे कि एक ब्लैक कलर रॉक है जिसका नाम क्या है, बसल्ट. वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है? रेड कलर में. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है ना आयरन है, इस वजह से वो रेड कलर में चेंज हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. ओके, तो अ ब्लैक कलर्ड रॉक, क्या नाम है ब्लैक कलर रॉक का? बसॉल्ट. बसॉल्ट जो है वो किस में चेंज हो जाता है? रेड कलर में. ब्लैक से रेड कलर में चेंज हो जाता है. क्यों, किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर जो है वो क्या है? आयरन ऑक्साइड है, इस रीजन की. A natural process that breaks down rock, soil and mineral in smaller particle at earth surface is called weathering. तो weathering क्या होती है? जब एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिससे कि रॉक्स को, सॉइल को और मिनरल को छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉलर पीसेस में जो है वो तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन करते हैं. रॉक कौन करता है? रॉक्स करते हैं. रॉक्स को, मिनरल को और सॉइल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है नेचुरल प्रोसेस से. नेचुरल प्रोसेस क्या हो सकती है? जैसे रेन हो गई, विंड हो गई, ठीक है, मूविंग वाटर हो गया. इनकी इनकी हेल्प से ये नेचुरल प्रोसेस है जो रॉक, सॉइल और मिनरल को स्मॉलर पीस में तोड़ती है अर्थ सरफेस. इसको हम बोलते हैं वेदरिंग. So this is the definition of weathering, that a natural process that breaks down rocks, soil and minerals in smaller particles at earth's surface is called weathering. Rocks undergo both physical and chemical changes due to weathering to form soil. तो रॉक्स जो हैं वो बोथ फिजिकल भी और केमिकल चेंजेस भी होते हैं ड्यू टू वेदरिंग टू फॉर्म. ठीक है, रॉक्स के अंदर रॉक्स फिजिकल चेंज भी होता है उनके अंदर और केमिकल चेंज भी होता है. किस वजह से? वेदरिंग की वजह से, जब उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है सॉइल बनाने के लिए. तो वेदरिंग प्रोसेस में फिजिकल भी है और केमिकल चेंज भी इन्वॉल्व होता है. Erosion is a natural process in which wind, water transport soil, rock and other material from one place to another. Erosion एक ऐसा natural process है जिसमें wind जो है, हवा, पानी क्या करती है?
ट्रांसपोर्ट करती है किसको, सॉइल को, रॉक को और दूसरे मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करती है। तो इरोजन क्या है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जिसमें विंड और वाटर, ठीक है, रनिंग वाटर, मूविंग विंड ट्रांसपोर्ट करती है क्या, सॉइल, रॉक एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे सॉइल को, रॉक को, दूसरे मटेरियल्स, पेबल हो गए, स्टोन्स हो गए, सैंड हो गई, इनको क्या करती है, एक प्लेस से दूसरी जगह पर पहुंचाती है। इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, इरोजन जब एक किसी लैंडस्लाइड पे होती है ना, जहाँ जमीन खिसक जाती है, ठीक है, वो एग्जांपल है एक फिजिकल चेंज का। ठीक है, सो इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मतलब कि जब जमीन खिसकती है उस टाइम पर जो इरोजन होती है वो किस चीज का एग्जांपल है, एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल। So I hope you have understood all the important points. Now I have covered all the important points for you. Now I'll come up with my next video with some extra important questions from this lesson which will help you at the time of your exams as well as when you will read this chapter. So please do like my video and subscribe my channel. See you soon. Thank you so much.